एशिया के लार्जेस्ट वर्ल्ड पार्क में आपका स्वागत है। ये है सिंगापुर बर्ड पैराडाइज। इस बर्ड पैराडाइज में 4000 से ज्यादा स्पीशीज है एंड 10 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बने हुए हैं। 10 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये सारी स्पीशीज यहां रखी हुई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ये बर्ड पैराडाइज और ले चलेंगे 2 डिफरेंट शोज में। सो फॉलो मी। Keep your eyes up there. Let's welcome Ferrari and Lambo, the Scarlet Macaws. Macaws like them can be found in the forests of South America. Okay. And then you want to turn around? Alright, can you do the rooster? Do you believe me now, Lynn? I believe you now. Quincy said, welcome to Paradise. Let's say that one more time, shall we? Quincy, welcome them. Welcome to Paradise. Alright, so Quincy, you did the sound of the rooster. Can you do the sound of the cat? Okay, come on, Quincy. Telephone. Good job. Can you give it up for Quincy, everyone? Now, parents, now let's start with something simple. How about a nice hello? Hello. There you go. Very nice and sweet hello. Okay, so as you all know, his name is Amigo, but you can say his own name as well. Listen to this. Tell everyone your name. Amigo! One more time, what's the name? Amigo! Amigo it is. Okay, now Amigo, there's so many of them today. How would you like to greet all these nice people? How are you? He's asking how are you? So how are you all feeling today? Good? Let's see.
She has different arms for almost 27. Animals are just like this one. Animals tend to live a lot longer than they would in the wild. So that means after working for so many years, our animals get to retire. Pretty abundant in the wild, close to about 10 million of them. These birds have an excellent sense of smell. They're able to pick up the stench of walking meat from miles away. Joining us on our amazing adventure. We hope you had a great time and happy birthday! अभी हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। तो आज आपने देखा कई प्रकार के बर्ड्स और 2 शो। सो ये जो 2 शोज़ है ये दिन में 4 बार होती हैं। तो आप आने से पहले एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। और अगर आप टूरिस्ट हो और आ रहे हो बर्ड पैराडाइज देखने, एक बार टिकट प्राइसेस चेक कर लीजिएगा ईदर ऑन ट्रिप और trip.com। कई तरह के डिस्काउंट्स चलते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो जिसमें भी आपको बेटर और सस्ता टिकट मिले वही ले लीजिएगा। आई होप यू लाइक द ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं सिंगापुर के बारे में कोई और ब्लॉग बनाऊं सो डेफिनेटली मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।